Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students and viewers. I'm hopeful that all of you are fine and with good health, and may Allah save us all in this crisis of Corona. Today, I'm going to discuss a very important topic, that is business process re-engineering. This is a very important topic, and it is very beneficial for all the organizations, especially for the public sector organizations in the developing countries. Now, let me first discuss the background of business process engineering, how this approach emerged in literature. In 1990, a book came up in market, and the title of the book was Re-Engineering the Corporation, and it was written by an American author, Michael Hammer and James Shampy. So in this book, the authors first time coined this term, that is the business process re-engineering. So this book and this concept becomes so popular all over the world, first in USA and then all over the world, that it had massive impact on all the businesses. And later this BPR became the keyword for the different businesses. This was the time in America when President Clinton was there in USA, and there was a parliamentarian named, I think, Gore, who was assigned the very important task by President Clinton. Now, this was the time in USA when the public sector in the USA was again inefficient at that time. The different processes were obsolete, lot of red tapeism was there, and lot of delays were being noticed in the public sector of the USA. So when this book came in the market, the President Clinton give the assignment to his parliamentarian Gore that you'll have to analyze the different processes
importantly in the public sector organizations, that why the different delays are being there in the public sector organizations, and why the growth chances of the employees are not there, and why the red tapeism and the different obsolete processes causing the uncomfortableness and delays for the different customers and for the citizens. Then when this book came up in the market, the Gore prepared a 400 pages report and presented to the president of USA, and it was decided by the president after reading that report. That report might be available also on the internet. They finally, I will conclude here, the President Clinton ordered all the business public sector organizations to re-engineering their processes. So after re-engineering all the business processes and most important processes in the USA government sector, after some time, these departments became so efficient and their progress and their improvement became so high. So this is the importance of this concept, that is the business process re-engineering. Now, this concept may have absolute in the developed countries like USA and Europe, but this concept is still very much needed in the developing countries like Pakistan. And the situation that was one time prevailed in the USA public sector, the same situation is now prevailed in the countries like Pakistan and the other developing countries. Because there are the different obsolete processes in the different public sector organizations, delays are there, the citizens and the customers are being suffered. आप ये देखें कि आप इसके रूल्स देखें हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारे मिनिस्ट्रीज के, दीज रूल्स आर सो ऑब्सोलीट. और अगर आप एस्टा कोड खोल के देखें जिसमें हमारे रूल्स लिखे होते हैं मिनिस्ट्रीज के, these are so obsolete that some of the rules are as old as before the existence of Pakistan, and they are still being prevailed in the public sector organizations. और कुछ रूल तो आपको ऐसे भी मिलेंगे एस्टा कोड में जो 1857 की जंग आज़ादी के हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रिवेल हो रहे हैं. So this was the background that how this business process re-engineering concept emerged in the market and in the literature. Now let's discuss about change. This business process re-engineering concept, I will formally define it later in the preceding slides. This is related to the change. There are different types of changes, referred in the literature. They can be the technical change, there can be administrative change, there can be incremental change, and there can also be the radical change. So there are the different types of changes. With respect to this spectrum of change, we can divide this change into the different types, and these types are being prevailed in the different concepts existed in the literature. So in the last 2 decades, the most important spectrum of change, that how the change evolved under the different concepts, there were the 4 important concepts. The first one is the automation. The second one is the rationalization of the procedures. Then re-engineering concept became in the market, as I told you, in about 1990s. Then the paradigm shift is again related to the change. If we compare, as we know that whenever there is a change, there is the risk, and when there is more change, there is more risk. So if we compare all of these concepts with respect to the risk and return, so you can see on the slides that there is low risk and low return as far as the automation is concerned. When we move towards the rationalization of the procedures, then the risk की जो capacity है that has been increased. Similarly, the risk magnitude increases further when we consider the re-engineering. And finally, when we discuss about the paradigm shift, then of course the magnitude of the risk is highest. Now, what is automation? Automation is usually referred to computerization of the processes to speed up the existing tasks. So if we just computerize the different existing procedures and processes, then that is termed as computerization. There is a certain myth in the literature, and there is a misconception in the literature that re-engineering is related to the automation. So that is just a misconception. That is entirely, the concept of re-engineering is entirely different from the concept of automation.
I will differentiate these concepts in my proceeding slides. So of course, automation helps us to improve the efficiency and effectiveness. Then rationalization of the process and procedures. It refers to streamlining of the standard operating procedures, eliminating obvious bottlenecks so that automation makes operating procedures more efficient. So again, if we are going to eliminate the bottlenecks and loopholes in the different processes, that is termed as the rationalization of the different procedures. And again, this helps us to improve the efficiency and effectiveness. But as far as the improvement is concerned, the improvement magnitude is marginal in the automation as well as in the rationalization of the procedures. Now let's first briefly define the business process re-engineering before going towards the formal definition of this concept. Business process engineering is usually referred to the radical redesign of business processes. Now this is very important, radical redesigning. As I told you that there are the different types of change, and we can also discuss the change with the magnitude of change. When we discuss about the terms like TQM and the automation and the similar concepts, then we actually talk about the marginal improvements. Okay? But when we discuss about the radical redesigning or when we discuss about the business process re-engineering, it means we are discussing the high returns. We are focusing on the higher magnitude of change with this concept. So business process re-engineering aims at eliminating the repetitive, paper-intensive, bureaucratic tasks. So the key point in the business process re-engineering is that we will have to re-engineer the business process by eliminating the different repetition sort of steps in that process. Then paper intensive work is never been allowed in the business process re-engineering concept, and we will have to link the IT with these processes. Then of course bureaucratic tasks should be eliminated, completely eliminated as far as the business process re-engineering is concerned. So the application of this business process re-engineering not only increase the improvement dramatically, but it also help us to reduce the cost significantly, and so that the product and the service quality and the overall viability of the organization is being increased through this process. Then comes the paradigm shift. It refers to the more radical form of change where the nature of business and the nature of the organization is questions. So the scope of the paradigm shift is different as compared to the business process re-engineering. In the paradigm shift, we usually discuss the restructuring, in which we will have to restructure the whole of the organization structure. But as far as the BPR is concerned, the structure may remain there as it is, but we focus just on the few or the most important business processes, and we restructure or re-engineering those important business processes rather than restructuring of the whole of the organizational structure. So that is one of the difference between business process re-engineering and the concept of paradigm shift or restructuring. So paradigm shift concept again improves the strategic standing of the organization. Both BPR and paradigm shift helps us to attain the strategic improvements and long-term improvements for the viability of the organizations. Now let's formally define this concept of BPR. And again, this definition was coined by Hammer and Champy in 1993. This is so important definition that whenever we refer the concept of BPR in literature, so I hardly see any paper which has not referred to this definition. So important is this definition. So I will try to explain this definition a little in detail. Now, what is BPR? BPR is the fundamental rethinking and radical redesigning of business processes to bring about dramatic improvements in critical contemporary measures of performance, such as cost, quality, service, and speed. There are some important terms in this definition.
I would like to explain these terms one by one. The first one is the fundamental, that we will discuss that what is the fundamental rethinking. And the second important term is the radical redesigning. We will discuss what is the difference between radical and marginal sort of redesigning. Then the most important on which the business process re-engineering focus, that is the processes. So what are the processes, and we will discuss in detail. And most importantly, dramatic improvements. Now this is the most important term in this definition, that BPR helps us to achieve the dramatic improvements in the different indicators of performance, such as cost, quality, service, and speed. Now, first of the keyword that was used in the definition is the fundamental. So fundamental means it applies that everything, every assumption, every reason, every activity is challenged by asking why it should be continued. Whenever we see the different processes or the procedures in the organizations, we should ask ourselves as the manager that why these processes and the procedures are being prevailed or being continued in the way they are being prevailed. What is the reason of doing all of these different steps which constitutes the different processes? So over time, practices that were once required become obsolete and need to be removed. As I discussed earlier, if we consider the public sector organizations and the Ministry of Pakistan especially, so you will see that there are the different obsolete processes there. But अगर हम इसको देखें, these processes were very much important, and when these processes were made, ये गोरे जो हमारे लिए बना के गए थे procedures, ये बड़े अच्छे procedures थे. But at that time there was no concept of IT का कोई concept नहीं था, computerization का कोई concept नहीं था. For that time, that were the very important processes and the procedures. But nowadays, these processes are absolutely obsolete in nature. So in the fundamental rethinking concept implies that the company should reconsider the work patterns used to operate the business. That is, why do we do what we do, and why we do it in the way we do. And this concept just ignores what is and concentrates on what should be. तो हम जब different processes को देखते हैं in the organizations, so we'll have to ask ourselves that why the different steps are being involved in these processes, whether these steps are causing delays for the organizations or for the customers and the employees. So you will have to rethink that why these steps should be there within a process, because rules are mostly obsolete, erroneous, and inappropriate. Therefore, we will have to change all of these rules. We'll have to rethink about our business processes. और इसको हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच देखते हैं कि वाई ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कि कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, अगर कोई फाइल मूव हो रही है नीचे से ऊपर तक तो वो क्यों मूव हो रही है, इन स्टेप्स में कोई वैल्यू एडिशन हो रही है नहीं हो रही, अगर उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो विल हैव टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दीज अननेसेसरी रेपिटेशंस एंड ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस. So that is meant by the fundamental rethinking, that we should reconsider that why the different patterns of operating the businesses should be, why not these should be changed. Then the second term used in the definition of BPR is the radical. Now radical redesigning is the most important term. There are the two types of change. One is the marginal change and the other one is the radical change. When we talk about the marginal change, so actually in that concept we are usually interested in some change like 10% change or 15% change. But when we talk about the radical change, in that sort of change we want to have the dramatic change. We want to have the sort of 90% change, 100% change. We want to have the change in the different business processes. So this important term, that is radical redesigning, differentiates this concept of BPR from the other disciplines such as business improvement, continuous improvement, TQM, total quality management, business enhancement.
in the sense that most of the concepts like TQM and the business enhancement usually focus on the marginal improvement, but BPR usually focus on the radical sort of redesigning or radical change. And in this concept, we invent the new ways of doing things and we get into the roots of the things, and usually we disregard all the existing structure and the procedures. हम existing जैसे जो चीज़ें हो रही हैं किसी organization में उसको just ignore कर देते हैं और we just concentrate that and we design that how the new ways of accomplishing the work can be achieved. So we just ignore the existing processes and we just focus on that how these can be radically re-engineered with ignoring the existing sort of steps in those processes. So in BPR, we do not try to improve the existing situation. We try to invent. We try to radically redesign the completely new ways of accomplishing the work. So that is meant by this radical change, and this radical change is the key step in the business process re-engineering concept. Next comes the dramatic improvement. Usually in the BPR, our target is the dramatic improvements. Dramatic improvements refers to the major changes in the current systems. So again, we are not targeting the marginal changes or the marginal improvements, but we target the dramatic improvements or the major changes in the current systems to achieve the breakthroughs and the significant improvement, not the marginal improvement. So we don't focus on the marginal improvement. If our focus is the marginal improvement or the 5 to 10% change or improvement, then the continuous improvement and the TQM is the most relevant concept. But if we want to have the dramatic improvements, we want to increase our improvements from 80% to 90% or 100%, then our target should be BPR. So the major focus on the BPR project is the dramatic improvements. Then comes again the most important term is the process. What are the different processes? Processes are usually defined as a set of the different activities that take one or more sort of inputs and creates an output through a form of transformation process. It focuses on the business processes instead of organizational structures. So BPR जो focus है BPR का, that is on the business processes instead of the organizational structures. There are the different processes which are being prevailed in the different organizations. Like अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो एडमिशन जो स्टूडेंट का एडमिशन है, that is an example of a process. इसका एक इनपुट होता है, उसका एक आउटपुट होता है कि first of all the university will advertise the admissions in the newspaper, then the students will apply, that is the second step, then there will be a sort of screening, then there will be a test interview, and finally the students will be admitted in the university. So that is a sort of process. Similarly, check cash करवाना, lectures deliver करना, these are the different processes in the university. Similarly, if you take the example of banks, there are the different processes in the banks. आपने अगर चेक को कैश करवाना है तो जाहिर है उसका एक प्रोसेस है, और इसी तरीके से आपने आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, आपके और जो डिफरेंट टास्क होते हैं विद इन दी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसके हर एक का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है. BPR जो है, BPR एंड बोथ BPR एंड TQM, they just concentrate on these processes, and in the BPR concept we want to have radically change these business processes. Now let's give you an example of BPR first, then we will move forward. Let's take the example of a cash transaction. You want to have the cash through a check in a bank. Now ये जो चेक कैश करवाना है इसका भी एक प्रोसेस जाहिर होता है. आज से कुछ अर्सा पहले हम इसका जो प्रोसीजर होता था, इसका जो डिफरेंट स्टेप्स होते थे कि आप चेक बुक लेकर जाते थे, चेक को साइन अमाउंट लिखते थे, साइन करते थे, आप उधर बैंक में सबमिट करवाते थे.
ना वो क्लर्क उस चेक को पे मूव करता था, डिफरेंट रजिस्टर्स में एंट्री होती थी, और आफ्टर अ कंसिडरेबल टाइम आपको वो चेक जो है वो जो बैंक मैनेजर है वो आपके हैंड ओवर कर देता था। नाउ जब आपने चेक बैंक को प्रेजेंट किया तो ये उसका इनपुट स्टार्ट हो गया इस प्रोसेस का, और जब आपको कैश मिल गया तो ये उसका आउटपुट है, द फाइनल आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस। नाउ अब क्या हुआ, हाउ दिस प्रोसेस वाज री इंजीनियर्ड। किसी के माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट आया कि वाई शुड वी इंट्रोड्यूस एटीएम। नाउ ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। जाहिर है किसी ना किसी के माइंड में तो आया होगा ना ये वाला जो एटीएम का जो कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने क्या किया, ये जो चेक कैश करवाने का प्रोसीजर है उन्होंने इसको री इंजीनियर कर दिया। नो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड द री इंजीनियरिंग। यानी एटीएम में उन्होंने ये सारे जो स्टेप्स थे जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक स्टेप भी कह सकते हैं, उसको उन्होंने बिल्कुल रेडिकली चेंज कर दिया, और एक कस्टमर को उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो कैश लेना चाह रहे हैं कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जब बैंक खुले होंगे तो आपको कैश मिलेगा। आप रात को 2 बजे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, यू गो टू दी एटीएम एंड यू कैन हैव द कैश फ्रॉम योर बैंक। तो दैट इज़ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ बीपीआर। यानी ये जो इस प्रोसेस को जब उन्होंने री इंजीनियर किया तो ये इंटायरली उन्होंने रेडिकल चेंज आ गई और एटीएम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। Similarly, let's take another example just to understand this concept of business process re-engineering. Usually हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन प्रोसेस होता है कि उसी जो मैंने आपको बताया इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आपका ऐड आता है, आप अप्लाई करते हैं, और इससे पहले अगर आप टिपिकल एक किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो अच्छे खासे चक्कर लगते हैं आपके कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स को हम मार्केटिंग में कहते हैं कि कस्टमर जो है आपका बॉस है और उसी को हम चक्कर लगा रहे हैं बार बार। ठीक है, आप अप्लाई करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनको फिल करते हैं, और 1-2 महीने के प्रोसेस के बाद आपके जो है वो एडमिशन हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स प्रोसेस स्टिल इन्वॉल्व, स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। नाउ इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सम यूनिवर्सिटी इन यूएसए और यूके, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को देखें री इंजीनियर बिल्कुल कर दिया बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड बाय यूजिंग दैट बीपीआर कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि उन्होंने वेबसाइट बना दी, जितने फॉर्म्स होते हैं वो कहते हैं यू शुड नॉट हैव टू विजिट द यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म्स, उसका क्राइटेरिया दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट while staying at your room in Pakistan. You can just visit the university website, all the forms, you can download the forms. आप उसको फिल करते हैं तो वो फिल करके आपको सबमिट करवाने भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, आप उसको ऑनलाइन ही फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद ऑनलाइन ही बाद दफ़ा वो आपको कॉल लेटर दे देते हैं, या आपको इंटरव्यू करना है या टेस्ट करना है वो भी आपका ऑनलाइन हो जाता है। और इसको थोड़ा सा अगर और आगे जाएं तो आजकल तो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया। वो कहते हैं कि आपको क्लासेस लेने की भी फिजिकली ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही क्लासेस भी ले लें, और यू कैन सबमिट योर फीस ऑनलाइन। सो एवरीथिंग इज़ यू नो दैट इज़ ऑनलाइन। ना मेरा बताने का मकसद ये था कि वो जो एक एडमिशन का प्रोसेस था उसको उन लोगों ने उन्होंने री इंजीनियर कर दिया फॉर द सेक ऑफ कस्टमर्स। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, हम री इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं टू द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसका जो मेन जो की पॉइंट होता है दैट इज़ द कस्टमर्स। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं या तो एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट के लिए कर रहे होते हैं या कस्टमर के बेनिफिट के लिए कर रहे होते हैं। तो इन दिस वे देखें कि हमने जब इसको री इंजीनियर किया डिफरेंट प्रोसेसेस को, तो कितना फ़ायदा हुआ आपके कस्टमर्स का, और वो जो ब्यूरोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व थे, जो SOPs इन्वॉल्व थे, दैट आर एंटायरली बीइंग वैनिश्ड। So these are just the good examples that in order to understand the concept of BPR. There are many other examples. In the last 1 or 2 decades, all of the world have used this concept, and I can tell you on the basis of literature and the survey, the different companies which apply this concept, they gained the improvement by more than 1000%. Can you believe it? So that is the importance of this concept of BPR. So process are the most important source of competitive advantage. They are the different sources of competitive advantage. Among all of these sources, process is the most important through which the different companies can have the competitive advantage for the long term for their own organizations. तो आजकल अगर हम देखें जो different अच्छी organizations हैं वो डेट हैज़ बिकम अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये जो री इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बन गया हुआ है, और वो हर रोज़ ये सोच रही होती हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज़ करें और अपने कस्टमर को किस तरीके से हम उसको सेटिस्फाई करें। और ये जो अननेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं
अगर कोई ऐसा ब्यूरोक्रेटिक स्टेप इन्वॉल्व है तो उसको हम ख़त्म कर दें, उसको एलिमिनेट कर दें और डायरेक्ट हम जो है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें. तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट. So process can also be defined as any operational or administrative system which transforms input into the valued outputs. Typically a sequence of tasks arranged into a procedure or set of work arrangements, perhaps involving various machines, departments, people. अगर आप आपका प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हैज़ इट्स ओन स्टेप्स. Similarly, the different जो objects होते हैं process के, that may be physical like different products, and that can be different services, or that may also be in the form of the different informations. So the fundamental concept of BPR is the business process. In the BPR concept, we just target the different business processes. Business processes have the outcomes and the recipients of these outcomes, which are mostly the citizens or the customers or even the employees of the organization. So we use this re-engineering concept in order to facilitate the recipients of these outcomes. They may comprise many tasks, the processes may comprise many tasks, and these tasks may be performed across the various departments or sections within the organization and even outside the organization as its trading partners. So whenever we do the BPR exercise in the different organizations, we will have to thoroughly analyze the different steps involved in the different processes and how this process goes through the different departments or across the departments within the organization or across the different other organizations outside the boundary of the organization. So we will have to thoroughly analyze all of these steps which are involved in a particular process within the organizations. So BPR exercises look at these processes and try to eliminate tasks. Now, these are some of the very important terms which are used in business process re-engineering, that whenever we are going to analyze the different processes, we will have to identify those bureaucratic sort of procedures, those non-value added sort of activities which should be entirely eliminated. So we can use the different IT, we can use computerization for this process as well. So these are actually the non-value added items which just hinder the progress of that process and that directly suffer the recipients of the process, which are usually the customers. So we don't have to suffer our customers in the form of the delays, in the form of those bureaucratic tasks and the procedures. So we'll have to entirely eliminate these bureaucratic sort of steps and the duplications. Most importantly, we'll have to eliminate the duplications as well. So BPR exercises require a reshuffle of traditional organizational structures. It is desirable to have cross-functional teams. Now that is very important. Whenever we do the BPR exercise in the organizations, we need the cross-functional teams. Now these are sort of teams which work across the different functions, working on an entire process. यूजुअली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है, ऑन डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ different specializations. Like one is the administration department, the other one is the accounts department, the other one is the quality control department. और वो डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं. लेकिन ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये भी अब दैट हैज़ बिकम द ओल्ड कॉन्सेप्ट इन मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस. अब इसमें स्पेशली व्हेन वी डिस्कस द बीपीआर, तो इसमें हम इसकी बजाय ना क्रॉस फंक्शनल टीम यूज़ कर रहे होते हैं, या इसमें हम क्रॉस फंक्शनल मैनेजर को यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ द फंक्शनल मैनेजर. और इनको टेक्निकली स्पीकिंग हम इनको कहते हैं दीज आर द प्रोसेस ऑनर्स. नो, ये जो प्रोसेस ऑनर्स क्या करते हैं, ये अक्रॉस द डिफरेंट फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो ये जो प्रोसेस ऑनर्स होते हैं ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, हु नो समथिंग अबाउट ऑफ एवरीथिंग, और वो थोड़ा सा फाइनेंस का भी खुद ही काम कर रहे होते हैं. नो, इसका मकसद ये होता है कि जब वो प्रोसेस फ्लो करता है तो उसको अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना मूव करना पड़े और एक ही प्रोसेस ऑनर हो जो इसको चला रहा हो प्रोसेस का.
तो इसकी एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अक्सर आपने देखा होगा कि सीडीए ने या वापडा ने वन विंडो ऑपरेशन यूज़ कर देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ देयर प्रोसेस। अब वन विंडो ऑपरेशन में क्या होता है कि वो एक मैनेजर ऐसा बैठा देते हैं जिसको सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होता है। वो जस्ट एक इनपुट लेता है फ्रॉम द कस्टमर एट वन सिंगल विंडो, और वो अपना सारा काम जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का खुद कर रहा होता है, अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स घूम रहा होता है, और फाइनली वो आउटपुट ला के उसी एक सिंगल विंडो में, वन विंडो ऑपरेशन में अपने कस्टमर को डिलीवर कर देता है। दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज्ड इन बीपीआर, कि इसमें हम प्रोसेस ऑनर्स को यूज़ करते हैं। अब वो एक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं, वेदर इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स और द अकाउंट स्टेप्स और सम अदर टेक्निकल स्टेप्स, वो ऑनर उन सारे स्टेप्स का रिस्पॉन्सिबल होता है ना। उसकी रीज़न ये होती है ताकि डिलेज ना हो और आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली शुड मूव टूवर्ड द फाइनल आउटपुट फॉर देयर कस्टमर्स, बिकॉज द कस्टमर्स आर वेटिंग एंड वी विल नॉट हैव टू लेट आवर कस्टमर्स वेट। सो दिस कट्स डाउन द टास्क हैंड ऑफ्स का डुप्लीकेशंस को हमें कट डाउन करना पड़ता है। वी विल हैव टू एलिमिनेट द डिफरेंट एरर्स। देन क्यूइंग को हम ख़त्म करते हैं और पैरेलल प्रोसेस की तरफ जाते हैं, और डिफरेंट स्टेप जो पैरेलल हो सकते हैं उनको पैरेलल प्रोसेस करते हैं। रिकैप्चरिंग ऑफ द डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द पीपीआर इज़ कंसर्न्ड। वो जो डाटा है आपका सिक्वेंशली मूव नहीं करता अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बल्कि एक ही पॉइंट पे हम उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको डिस्पर्स कर देते हैं टू ऑल द रेसिपिएंट्स हु नीड दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो बीपीआर में होता है कि हम जब इन प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे होते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि विल हैव टू हैव द चेक्स एंड द कंट्रोल्स देयर। अभी मैंने आपको जो है एटीएम की एग्जांपल दी, तो एटीएम्स के अपने जो है कंट्रोल्स हैं। ठीक है, आपको पासवर्ड बताते हैं और चिप होती है, वो उसको मशीन रिकग्नाइज करती है। सो दी बाय यूजिंग दी आईटी दे हैव यूज्ड देयर ओन कंट्रोल्स। तो बीपीआर जब हम किसी भी प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस दोज कंट्रोल्स। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दी बीपीआर, हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका जो ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सब कम से कम हो। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू इन्वॉल्व द डिफरेंट पीपल इन दैट प्रोसेस। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर जितने ज़्यादा आपके लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आपका प्रोसेस उतना ज़्यादा डिले होता जाएगा। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन दी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ज़्यादा लॉन्ग हायरार्की होती है हमारे डिफरेंट जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स होते हैं। आपके वो जो प्रोसेस होता है वो अक्रॉस द डिफरेंट हायरार्कीज मूव करता है। ठीक है ना, इसकी जस्ट आई गिव यू द एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपके किसी लोअर लेवल एम्प्लॉइज़ ने SPS 1 के स्केल के बंदे ने कोई एप्लीकेशन मूव करनी है तो अपने बॉस को लिखेगा, वो अपने बॉस को लिखेगा, वो उसका ऊपर वाला बॉस अपने बॉस को लिखेगा। ठीक है, और फाइनली वो अप्रूव होगी तो जस्ट जिसने अप्रूव करनी है अथॉरिटी ने, वो भी अपनी तौहीन समझेगा कि आप डायरेक्ट उस बंदे को रिप्लाई करें, वो अपने से नीचे बॉस को लिखेगा, वो अपने से नीचे बॉस को लिखेगा। तो एक छोटे से प्रोसेस में आपको कि आपको महीना 1.5 महीना वैसे ही लग जाता है। तो डैट इज़ ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स होते हैं इनको हम एलिमिनेट करते हैं व्हेन एवर वी डू दी PPR एक्सरसाइज इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। So I just explained the concept of business process re-engineering. इसको हमने define किया है. There are the different alternative terms which are synonymously used in the literature, such as business process redesign, business transformation, or business process change management. So all these are the related terms or alternative terms which can be used alternatively in place of that BPR, business process re-engineering. So re-engineering business processes means tossing aside existing process and starting over. Now again, I just explained that we just ignore the existing process. We will have to ignore the existing process, and we will have to analyze the process right from the scratch. And we will have to imagine as the existing process does not exist in the organization, and we will have to start from the scratch, that how we should start and how we should immediately or speedily deliver the output to our customers. Now there is another important
concept which has been used in this BPR concept, that is the simplicity. Now simplicity, आप अगर again I will give the example of bureaucratic organizations or the public sector organizations. आप उनके प्रोसीजर्स देखें तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं. छोटे छोटे काम को जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिलेज होती हैं, बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, कंट्रोल्स बेतहाशा होते हैं. साइनिंग, एक आपने किसी डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन दे दें तो वो एक महीना तो साइनिंग होती रहती है, आपका बॉस का बॉस साइन करेगा. और ना अब ये साइनिंग जो है इसका क्या, इसे वैल्यू एडिशन क्या हो रही है फॉर द कस्टमर. कस्टमर बेचारा वेट कर रहा होता है. तो दैट इज़ यूजली सीन इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. I'm not talking about all these sector organizations. I'm generally talking about the organizations which even now involve the different sort of bureaucratic processes. एक टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो विच आई यूजली रेफर इन माई मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स. ये जो कोटेशन है जिसकी आइंस्टाइन की है, और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट एनी इंटेलिजेंट फूल कैन मेक थिंग्स बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Now, this is a very important quotation. यानी वो ये कह रहा है, आइंस्टाइन ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाना जो है that is very simple. यानी आप, it is very simple कि आप बेतहाशा स्टेप्स डाल दें, कंट्रोल्स डाल दें और आप एक प्रोसेस को डिज़ाइन कर लें. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. लेकिन आसान चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. एंड दैट रिक्वायर्स द टच ऑफ जीनियस टू बिल्ड द सिंपल प्रोसेसेस. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट behind the business process re-engineering also, that we will have to, whenever we want to re-engineer our business processes, then we will have to make it more simple. We will have to eliminate the different bureaucratic steps, डिफरेंट अननेसेसरी स्टेप्स और दी रेपिटेटिव स्टेप्स. ठीक है, हमें सिंपल बनाना इन प्रोसीजर्स को. जिस तरह एक एटीएम की मैंने आपको एग्जांपल दी या यूनिवर्सिटी की एडमिशन की एग्जांपल दी. नो, दैट इज़ सो सिंपल. यू जस्ट टेक योर कार्ड, गो टू द एटीएम एंड जस्ट हैव योर कैश. So there is no rocket science in that, and no any procedure or not even a person is involved in this sort of process. तो ये जो है बीपीआर जब हम कर रहे होते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो हमारा फोकस ये होता है कि जितना पॉसिबल हो हम अपने प्रोसेस को सिंपल बनाएं. और इसको सिंपल बनाना है विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. वी शुड ऑलवेज कीप इन टू माइंड द कस्टमर्स वाइल डूइंग दिस बीपीआर एक्सरसाइज, कि हाउ क्विकली एंड हाउ स्पीडली and how simply we can serve our customers. That is the key point behind BPR concept as well. So there are the different dimensions of business processes. One is the entities. Business process involve the different entities. These business process entities can be of different types. That may be the inter-organizational entities, that may be interfunctional entities, and that can also be the interpersonal entities. Now, entities means by which the company along the same value chain interact. For example, in the interpersonal sort of processes, these processes involve the people within one functional group or the department. Similarly, interfunctional processes involve the cross-functional boundaries within the organization. And the inter-organizational processes may involve the different other organizations outside your own organizations. So these entities also define the scope of the business processes. Like the scope of the business process may be interpersonal, may be interfunctional, or may be inter-organizational, as I just explained. Then business process involve the different projects, and process results in the manipulation of these objects. These objects may be physical in nature, or that may also be informational, like services, and that may involve the both of the physical products or the information as well. Similarly, different activities and the different tasks are involved within any of the business process, and processes could involve the two most important types of the activities. That may be the managerial activities as well as that can be the operational activities.
BPR is not a process of trying to make marginal improvements. It ignores how work is now done and starts over from scratch. We should have the new idea that how we should start just ignoring the existing processes. It is a revolutionary process that challenges all the organizational structures, workflows, job descriptions, management procedures, controls, and organizational values and culture. So, viewers, this BPR concept is not a simple concept. That is a revolutionary sort of concept, and we will have to challenge everything. That why these things are being happening within the organization, and we'll have to challenging all of these procedures and the controls in order to better re-engineering our process and to better serve the customers. And when we talk about the customers, then we should always keep in mind that the consumers are not only the customers, the consumers of the products are not only the customers, but the employees of the organizations are also considered as the customers of the organization. So these processes may also hinder the performance of the employees as well. So now this is very important. अक्सर मैं क्योंकि इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देता रहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का और अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें आप देखें कि अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि इन दी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लोग काम नहीं करते, वो परफॉर्म नहीं करती, और अक्सर हम उसको रेलवे को कोसते रहते हैं, PIA को कहते हैं जी वो परफॉर्म नहीं कर रहा और फलाना डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। यानी हम डायरेक्ट जो टारगेट कर रहे होते हैं, वी यूजली टारगेट द पीपल और द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन एक चीज़ को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जो उसके प्रोसेसेस होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस। एक्चुअली वो प्रोसेसेस इतने ऑब्सोलीट होते हैं और इतने ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि इन सिस्टम्स में आप परफॉर्म कर ही नहीं सकता, कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर एक अच्छा जो मैनेजर है वो भी आके किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में लग जाए, तो इवन देन ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन दीज सॉर्ट ऑफ ऑब्सोलीट प्रोसेसेस। और एक अभी रिसेंट रिसर्च हुई थी कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने रिसर्च में थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन को टारगेट किया हुआ है। इन लास्ट 10 ईयर्स जो ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान में, लाइक जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले गए। तो उन्होंने उसकी रीजंस फाइंड आउट की उस रिसर्च में। तो उसको मैं जस्ट कंक्लूड करता हूँ। उसमें कंक्लूजन उस रिसर्च का ये था कि ये जो सब लोग छोड़ के गए हैं पाकिस्तान, और जो बिग ड्रेन हुआ है इन द लास्ट 1 or 2 डिकेड्स इन पाकिस्तान, उसकी एक मेन रीज़न उसकी ये नहीं थी कि आपको जो पे अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है। मेन रीज़न उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और वो इतना फेडअप हो गए इस सिस्टम से कि उन्होंने छोड़ के दे थिंक इट बेटर कि वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर जाकर काम करें। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वो चीज़ें हैं विच शुड बी फोकस्ड बाय आवर लीडर्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैं, जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करें, अपने प्रोसेसेस को री इंजीनियर करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म नहीं करती, उसकी रीजंस डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज द एम्प्लॉयज़। उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न जो होती है वो आपके प्रोसेसेस होते हैं, वो आपके सिस्टम्स होते हैं। Even the good and the efficient people cannot efficiently perform in these systems because of the bureaucracy and because of the unnecessary steps जो अभी हमने explain की है, जो involved होते हैं in the different procedures. So BPR is a reinvention of business processes rather than improvement or enhancement. तो ये always keep in mind कि BPR जो है ये marginal improvement नहीं है या performance enhancement नहीं है, that is the reinvention of something. That is the radical redesigning of the business processes, and that is one of the way we can differentiate this BPR concept from the other disciplines like TQM. We will just try to explain what is the difference between BPR and the other concepts of management. So BPR requires reshuffling traditional organizational structure. नो इसमें एक थोड़ी सी मैं आपको पॉइंट बता दूं। BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें विल हैव टू रीस्ट्रक्चरिंग द होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक पैराडाइम शिफ्ट में जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें
जो आपका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, डेट मे रिमेन एज सच इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम की प्रोसेस को टारगेट करते हैं, सारे प्रोसेस को भी टारगेट नहीं करते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेडिकल चेंज। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो चेंज है दैट इज़ लिंक्ड विद द रिस्क, ठीक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द बीपीआर, तो इसमें रेडिकल चेंज इन्वॉल्व है, तो रेडिकल रिस्क भी इन्वॉल्व है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीपीआर इज़ नॉट रिस्कलेस नहीं है, एक्चुअली ये रेडिकल रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है। और अगर इसकी मैं आपको एक सर्वे की बेस में बात बताऊं कि इन द लास्ट 1 or 2 decades ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन ने री इंजीनियरिंग की है, उसमें 60% फेल्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी वो फेल हुए हैं। लेकिन जो 40% सक्सेस हुई है, उनकी इतनी ज़्यादा सक्सेस हुई है कि दे इम्प्रूव द 2000% और द 5000% इम्प्रूवमेंट। आई विल जस्ट गिव यू सम इंटरनेशनल एग्जांपल्स। सो बीपीआर में हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेम है, हम की प्रोसेस को टारगेट करते हैं, कि नॉट ऑल दी प्रोसेसेस बट द की प्रोसेसेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वायबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम उन की प्रोसेस को जो है री इंजीनियर करते हैं, और क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक्ड होता है विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बेस पे फिर ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है दैट इज़ यूजली रेडिकली इम्प्रूव्ड। लेकिन इसमें एक चीज़ रूल होती है कि जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एटलीस्ट चेंज कर दें फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। नो दैट्स वाई आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वन विंडो ऑपरेशन। ये वन विंडो ऑपरेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन 1 या 2 प्रोसेसेस के लिए वो क्या करते हैं, एक फैसिलिटी दे देते हैं कस्टमर को, ताकि वो क्विकली कस्टमर्स को सर्व कर सकें। वही कॉन्सेप्ट है बीपीआर में भी, कि हम सारे स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के, हम सिर्फ कुछ प्रोसेसेस को टारगेट करते हैं, और एटलीस्ट उस प्रोसेसेस के लिए अपने रूल्स पॉलिसीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल एंटायरली चेंज कर देते हैं, सो दैट दैट प्रोसेस में बी री इंजीनियर्ड एंड राइटली डिलीवर फॉर द कस्टमर्स। और बीपीआर एक्सरसाइज में, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, वी यूजली इन्वॉल्व द क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये टीम जो होती है, ये जो प्रोसेस ऑनर का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, दे वर्क अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना। उसकी एक रीज़न ये होती है ताकि वो प्रोसेस को डिपेंड ना करना पड़े अपॉन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज हैपन इन द ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो दैट्स वाई क्रॉस फंक्शनल जो वर्क है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार द बीपीआर कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि एम्पावरिंग द वर्कर्स, दैट इज द की पॉइंट इन बीपीआर एज वेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस प्रोसेस ऑनर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस प्रोसेस ऑनर होता है, he is 100% responsible as well as he is 100% authorized for that particular process। उसमें उसको किसी बॉस से अप्रूवल लेने की ज़रूरत ना पड़े, और he should be involved right from the input of the process up to the output of the process। उसमें उसको unnecessary approvals या sign offs की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एम्पावरिंग वर्क अगर हम नहीं करेंगे उसको प्रोसेस ऑनर को, तो अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बिजनेस प्रोसेस का। अगर वही ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स अगर हमने चलाने हैं, या उसी तरीके से साइन ऑफ चलाने हैं या फाइल चलाने हैं, देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। So in short, if we say that what is BPR, BPR is reshaping the internal procedures and processes. And this is not the normal, reshaping, that is the re-engineering of the different processes and procedures. Now again, there is a misconcept in the literature sometimes also, that this concept of BPR is related to the other similar terms like TQM, like ISO 9000, automation, downsizing, restructuring, software re-engineering and change management. Now all these are the different concepts, and the BPR का जो concept है, that is different from all of these concepts. I will just try to explain that what is the difference between BPR and all of these concepts. Now let's discuss the difference between TQM and BPR. TQM, Total Quality Management, you have must have know this concept of TQM. Now when both of TQM and BPR involve change, but what is the difference? In TQM, we are targeting the marginal change. Again, as I told you earlier, we want to have 10% change or 15% change in our business processes. Now that is not the case with the BPR. In the BPR, we want to have the radical change. So the change concept of change is entirely, radical or dramatic as far as the BPR is concerned.
In that way, and both of TQM and BPR related to the change, but the magnitude of change is different in both TQM and BPR. TQM involves marginal change or incremental change, but BPR involves radical change. That is not the marginal change. Then TQM involves or target usually all the processes within the organizations. But that is not the case with the BPR. BPR do not target all the processes, but we will have to identify the key processes. ठीक है, what are the key processes? उसको सिर्फ हम री इंजीनियरिंग करते हैं ना. उसकी रीज़न आपको I just told you the reason of targeting the fewer or core processes. That is the better term. The core processes. उसकी रीज़न ये होती है, हम सारे प्रोसेस को इस तरह से टारगेट नहीं करते कि वेन एवर वी डू दी PPR एक्सरसाइज तो इट इन्वॉल्व दी रेडिकल रिस्क आल्सो. रिस्क का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है. इस वजह से उसको मैनेज करने के लिए वी जस्ट टारगेट 1 or 2 की प्रोसेसेस और कोर प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. देन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. TQM को हम कहते हैं दैट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी और ये तकरीबन चलती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट BPR इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द रेडिकल चेंज, और रेडिकल चेंज हम रोज़ नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज़ दी वन टाइम एक्टिविटी. और अनलेस के दोबारा आफ्टर द पैसेज ऑफ द कंसिडरेबल टाइम दोबारा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्सलीट हो जाएं, देन दी अगेन नीड ऑफ BPR अराइजेस. बट the BPR is usually a one-time activity because of again the risk involved in BPR exercise. Then TQM का जो टारगेट है that may be the short term, but the BPR का जो perspective है that is usually long term. TQM may be top down or bottom up approach, but BPR is usually the top down approach. It should be initiated most importantly by the top management. That is very important. That cannot be initiated from bottom to the upper hierarchy of the organization. That should be initiated now. What is again the reason is the risk involved and the change involved, magnitude of change involved in a particular BPR exercise. So that's why it is usually considered the top down concept. Then risk, again as I discussed earlier, whenever there is a change there will be risk, and whenever there is a bigger change there will be a bigger risk. So TQM में जो रिस्क है that is वो भी मार्जिनल होता है, लेकिन BPR जो है उसमें रेडिकल रिस्क होता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न के चांसेस हैं तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. इस वजह से वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग द BPR एक्सरसाइज. द स्कोप ऑफ द जो TQM है दैट इज़ यूजली नैरो. इसका जो स्कोप है वो नैरोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द BPR. BPR का जो स्कोप है that is usually greater than that of TQM. जो TQM का स्कोप है that is usually within the different functions, but जो BPR का स्कोप है that is across the functions. ठीक है, in that sense its scope is higher. The primary enabler of TQM is usually the statistical techniques. Whenever we do the TQM exercises, we involve the different statistical techniques for the sake of standardization or for some other purposes. But when we take into account the BPR, the primary enabler of BPR is IT. We'll have to involve the information technology at one stage or the other stage of the business processes. So the primary enabler of BPR is IT. TQM usually involves the cultural change, but BPR involves both the cultural as well as the structural change. Now TQM is more relevant to the standardization. We target the different standardized processes, but BPR is usually targets the flexibility, simplicity. Now that is important. Our procedures जो हैं वो इतने ज़्यादा rigid नहीं होने चाहिए as far as the BPR is concerned. BPR हम जो exercise है we usually do the BPR exercises in order to encourage this flexibility, and we usually discourage the rigid sort of processes within the organizations. In that sense जो हमारे जो processes होते हैं उनको हम कहते हैं that should be flexible, that should be simple. Again the target क्योंकि हमारा customer है तो we should have the flexibility in order to better serve our customers, not only to serve the customers but speedily serve our customers.
That is the key point of competition, among the different organizations these days. So I have already discussed the differences between BPR and TQM. Level of change is radical in re-engineering and it will be incremental in continuous improvement. स्टार्टिंग पॉइंट TQM जो है उसको हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. री इंजीनियरिंग में वी विल हैव टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, बट वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन स्लेट, यानी राइट फ्रॉम स्क्रैच हम देखते हैं कि हाउ दिस प्रोसेसेस शुड बी एक्चुअली रीडिजाइंड. री इंजीनियरिंग अगेन टॉप डाउन अप्रोच, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है ये बॉटम अप अप्रोच है. स्कोप ऑफ री इंजीनियरिंग इज ब्रॉडर बिकॉज ऑफ द क्रॉस फंक्शनल इन नेचर, while the scope of continuous improvement is narrower and it usually involves the scope within the functions or departments. Risk in the re-engineering is high risk is involved, while in continuous improvement or TQM the risk is low to moderate. Primary enabler, as I told you earlier, is the information technology in BPR or re-engineering, while the primary enabler in continuous improvement is statistical control. In re-engineering, both of the cultural and the structural changes are involved, while in TQM or continuous improvement, the cultural changes involved. Re-engineering is one-time activity and continuous improvement is a continuous activity. Again, re-engineering का जो concept है, that is usually a long-term impact on the organizations, while continuous improvement और TQM का जो concept जो impact है, that is usually short-term. Re-engineering focuses only on the core processes and not all the processes, but in TQM or continuous improvement exercise, we usually target all the processes involved in the organizations. Now let's discuss some of the similarities between TQM and BPR. Both TQM and BPR involves the key stakeholders, that is the customers. Then both TQM and BPR involves the processes, and teamwork is required again in both concepts, whether it's the TQM or BPR. Again, the assumptions behind both TQM and BPR are the processes, and documentation is involved both in TQM and BPR. But in TQM, we generally focus on some standardization and standardized documents. But the documents, जो nature है, that is different in BPR. In BPR, we usually targets the documentation in the form of flow charts हम बनाते हैं in order to better understand the different processes. जब इसकी different stages जो होती हैं BPR में, उसकी एक stage ये होती है कि we'll have to analyze the existing processes. उसकी जो documentation है, that is usually in the form of the different flow charts. और ये flow charts जो होते हैं different types के होते हैं, और अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि what sort of flow charts and documentation may be involved in this BPR exercise. So as I discussed, these are some of the similarities between BPR and TQM. So TQM, जो BPR है, that is actually the concept which has been initiated after that TQM concept. BPR and TQM share cross-functional orientation. BPR and TQM share same objectives, that is improvement. TQM involves the incremental improvement and is an open-ended process, while BPR involves the radical design in a bounded time framework, that is the one-time activity. Now, what is not BPR? अभी तो हमने एक डिस्कस किया कि BPR is not TQM. ये जो TQM का concept है, that is different from BPR. उसकी what is the difference between both of these concepts we just discussed? Now, re-engineering is not reorganizing, delayering or flattening. ये जो concepts हैं, again, these are different from re-engineering. Modifying how an organization is restructured and redesigning an organization's business processes are two different things. As I told you earlier, that BPR का जो concept है, that is not the same as that of the restructuring concept. Now, again, I would say BPR usually involves different processes and not the whole of the organizational structure. But restructuring involves actually the whole of the organization structure that has to be redesigned. An organizational structure should be designed so that it's best support the redesigned business processes. लेकिन जो business processes हैं, जो core processes हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा flexibility दिखानी पड़ती है organization structure में, ताकि आपकी वो जो hinders हैं between the
डिफरेंट जो आपके प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो हिंडर ना करें आपके उस बिजनेस प्रोसेस को. Then class, again there is a misperception that BPR is the same as that of downsizing. These are again the two different concepts. Downsizing focuses on the reduction of the workforce to achieve short-term cost savings. So reducing the capacity to meet the current low demand, doing less with less, that is the downsizing, while re-engineering focuses on rethinking from the ground up, finding more efficient ways of working, including eliminating work that is unnecessary. So in that sense, this re-engineering का जो concept है that is different from downsizing. लेकिन another जो concept है I would like to discuss here कि री इंजीनियरिंग अक्सर लोग इस तरह से नहीं कर रहे होते या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से भी नहीं कर रही होती कि उसमें चांसेस होता है कि हम जब डिफरेंट प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी आईटी इन्वॉल्व हो गई, आप ऑटोमेशन भी करेंगे ड्यूरिंग दैट बीपीआर एक्सरसाइज, तो फिर आपकी जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती. और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक बीपीआर एक्सरसाइज की, एक मज़दा और फोर्ड कंपनीज की, उन्होंने जब फोर्ड कंपनी स्पेशली जब उन्होंने री इंजीनियर किया आज से कोई 10-20 साल पहले अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को, तो जो लोग 400 लोग अगर काम कर रहे थे किसी एक सिंगल प्रोसेस के लिए, तो बाद में उनकी रिक्वायरमेंट जो है 4 पीपल, यानी 4 पीपल वर डूइंग द सेम थिंग आफ्टर द री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज विच वर अर्लियर डन बाय द 400 पीपल. तो बीपीआर में आपके डाउन साइजिंग के चांसेस तो होते हैं बट दीज आर एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. यानी डाउन साइजिंग को हम कहते हैं डूइंग लेस विद लेस बाय रिड्यूसिंग द मेन पावर, बट री इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है डूइंग मोर विद लेस. यानी हम डाउन साइजिंग अगर करना भी पड़ती है एट द एंड ऑफ दिस बीपीआर एक्सरसाइज, उसके बावजूद जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड जो आपका गेन होता है दैट इज़ many more times as it is before the BPR exercise. So in that sense BPR is different from that re-engineering concept is different from that downsizing concept. Now again information technology जो concept है that is very important, and whenever we are doing the re-engineering in any organization, तो किसी ना किसी स्टेज पे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी यूजुअली से दैट द की इनेबलर इन बीपीआर सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बीपीआर कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है दैट शुड बी लीनियर और फ्लैटर एटलीस्ट फॉर दोज कोर प्रोसेसेस विच आर गोइंग टू बी री इंजीनियर्ड. देन एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है. Then knowledge workers should be there who just take the knowledge and just disseminate wherever it is being required. और usually जब when we talk about the organizational structure, तो वो जो organization structure की जो tears हैं that is also being disappearing by the use of that information technology. आज से कुछ अर्सा पहले हम डिस्कस कर रहे होते थे कि there is the lower management and there is the middle management and there is the upper management. तो आजकल वो जो लोअर मैनेजमेंट की टेयर है इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोअर टेयर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एंड देयर इज 2 सॉर्ट ऑफ लेयर्स नाउ अकरिंग इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. सो इन बिजनेस प्रोसेस आईटी इज द की इनेबलर एंड इट्स जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग द वेलोसिटी. ठीक है, वी जस्ट वांट टू स्पीडीली serve our customers. That is the key point behind the BPR exercise. And again I would say customers जो आपके employees हैं that should also be the customers for the organizations, because these processes will directly affect the performance of the employees as well. So in BPR exercise we convert every paper process to the digital process by use of that information technology. To achieve large gains in productivity, technological improvements must be combined with significant changes in management and organizational structure and the reorganization and redefining of the workplaces. So that is the impact of technology. So sometimes we say BPR as the do or die project.
Now, why we say like that it is a do or die project? Because of the risk involved in BPR exercise. सो यूजली जब हम BPR एक्सरसाइज उन्हीं प्रोसेस के लिए करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स होते हैं, डिलेज हो रही होती हैं, अननेसेसरी कंट्रोल्स होते हैं. और अगेन हमें वेन एवर वी डू द BPR एक्सरसाइज वी शुड ऑल्सो keep in mind the risk involved in this radical change process. Now, but whenever we apply this BPR exercise in our organizations, it minimizes the threats from the rival firms, and this exercise and these processes serves as the competitive advantage for your own organizations. And जो business processes हैं, that helps you to attain the sustainable competitive advantage through this BPR exercise. So BPR helps us to leverage on unprecedented opportunity to take the giant leap forward. Okay, there's a few terms which I would like to explain that how BPR is different from automation and downsizing, restructuring, software engineering, or change management. Let's have a brief discussion on this, that how BPR is different from ISO 9000. ISO 9000 are the, again, based on the different standardization of the different processes. So in that sense, that is not BPR. Similarly, there is a misperception or misconception about BPR, that BPR is different from automation, and simple automation is not the BPR. और sometimes हम automation के बारे में कहते हैं कि automation is the more efficient way of doing the wrong kind of things. Now, this is a very important concept I'm telling you. अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी इवन इन मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, और स्पेशली मैं आपको अगर डिफरेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दूं तो हम कहते हैं कि हमने आईटी को इम्प्रूव कर दिया, आईटी को इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन इवन आफ्टर दैट ऑटोमेशन प्रोग्रेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव नहीं हुई. नो उसमें व्हाट इज द की पॉइंट बिहाइंड इट बिकॉज हमने सिंपल क्या करते हैं हम ऑटोमेशन के, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस होते हैं जो ऑलरेडी ऑब्सोलीट होते हैं उन्हीं को हम ऑटोमेट कर देते हैं rather than doing the re-engineering exercises on those obsolete processes. Now that is the key point which differentiates that automation process from that BPR. कि BPR में हम डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं करते, सबसे पहले री-इंजीनियर करते हैं, उसमें जो ऑब्सोलीटनेस है, जो डुप्लीकेशन है, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है विच कॉज डिले, उसको हम एलिमिनेट करते हैं, री-इंजीनियर करते हैं, फिर री-इंजीनियरिंग स्टेज पे किसी स्टेज पे हम आईटी को इन्वॉल्व करते हैं. सो इन दैट सेंस ये जो ऑटोमेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम BPR. हम समटाइम्स एक टर्म है हम कहते हैं ऑटोमेटिंग अ मेस इज़ एन ऑटोमेटेड मेस. यानी अगर आप ये री-इंजीनियरिंग नहीं करेंगे और अपनी ऑब्सोलीट प्रोसेसेस को ही ऑटोमेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ऑब्सोलीट प्रोसेसेस बन जाएंगे और एक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, मेस क्रिएट हो जाता है, जो अक्सर आई एम सीइंग इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. So that is the main difference between BPR and automation concept. BPR and downsizing, we have already discussed that how BPR is different from downsizing. Then we have discussed the difference between BPR and restructuring. Again, BPR is different from that of software engineering concept. In software re-engineering, actually we use the more updated software or the most latest version of the software in order to update the different things. So in that sense that is different from BPR. So BPR is a type of change, but that again is the different sort of change that may involve the behavioral change as well as the structural change, but this is always involve the radical sort of change. So in that sense, BPR is related to the change management process, but every change is not BPR. Now class, let's discuss the difference between the traditional business model and the process-based business model.
इन ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोसेस है डेट स्टार्ट्स एज एन इनपुट एक्टिविटी और देन इट फ्लोज थ्रू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ सीक्वेंशियल वे। यानी वो जो आपकी फाइल है या जो प्रोसेस है या जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वन बाय वन सीक्वेंशली मूव करती है। ठीक है, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो इट विल डू दी वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, देन इन डिज़ाइनिंग में चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में चलेगा। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, सीक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस प्रोसेस, आपकी डिलेज होती हैं। नाउ दिस इज द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल बिफोर द PPR एक्सरसाइज। नो, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में क्या हो रहा होता है, यूजली जो फोकस होता है वो आपका फंक्शनल होता है, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन फोकस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से डिलेज आ जाती हैं। एज आई डिस्कस अर्लियर, मल्टीपल हैंड ओवर्स होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट में अगर फाइल जा रही है या कोई प्रोसेस मूव कर रहा है तो वही काम आगे आपका जा रहा है, और मल्टीपल हैंड ओवर्स, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। और कुछ जो लोग हैं या कुछ बॉसेस आई वुड से इन्वॉल्व हैं, जस्ट दे आर इन्वॉल्व जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग। नो, इस साइनिंग का कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, डेट इज़ अगर वो कहीं आपने पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है तो यू हैव टू चेंज दी पॉलिसीज़, यू हैव टू रूल दी पॉलिसीज़। हमें वो सारे प्रोसेस चेंज करने पड़ते हैं इसमें, जिससे किसी किस्म की कोई वैल्यू एडिशन ना हो, और वही जो साइनिंग अथॉरिटी है वो हमें शिफ्ट करनी पड़ती है टुवर्ड्स दी प्रोसेस ऑनर। सो इन दिस वे जो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल हैंड ऑफ्स इन्वॉल्व होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा होता है। ठीक है, जैसा साइन है वो डुप्लीकेशन, कभी एक बंदा साइन कर रहा है, दूसरा बंदा साइन कर रहा है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, वर्क डुप्लीकेशन हो रही होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, जो कस्टमर होता है, डेट इज़ बैडली सफर्ड। आई एम टेलिंग यू, डेट इज़ बैडली सफर्ड। आपको अगर कभी इत्तेफाक हो ना किसी CDA के काम किसी जाने का या किसी मिनिस्ट्री में जाने का, तो आप अपना सर पकड़ लेते हैं कि यार ये क्या, सुबह से लेके शाम हो जाती है और आपका वो जो छोटा सा काम है वो भी नहीं हो रहा होता। नो, अगेन आई वुड नॉट डायरेक्टली blame the employees, but I would blame the systems in which these employees are being working. तो ये जो डिलेज होती हैं वो उन सिस्टम्स की वजह से होते हैं, उन ऑब्सोलीट प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जिसमें कस्टमर को कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसको जस्ट हम वेट ही करवाते रहते हैं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग द डिफरेंट ऑब्सोलीट रूल्स एंड द पॉलिसीज़ हम वो प्रोसेस को चला रहे होते हैं। इन दैट सेंस, दैट ट्रेडिशनल बिजनेस जो प्रोसेसेस होते हैं, they are not completely unsystematic in nature. Now, as opposed to the traditional business model, जो आपका process based business होता है, उसमें जो आपका process है that will move across the different departments. No, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि we involve the different process owners, और वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट का काम होता है वो एक प्रोसेस ऑनर को कर रहा होता है, जो एक्चुअली एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, जो एक जर्नलिस्ट होता है। नाउ ये क्यों काम वो कर रहा होता है और हम अवॉइड क्यों कर रहे होते हैं एक सीक्वेंशियल मूवमेंट को अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि वो डिलेज ना हो और फाइनल आउटपुट क्विकली हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। सो जो प्रोसेस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं उसमें जो फोकस होता है डेट इज़ इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंटल फोकस, और इस जो फोकस होता है डेट इज़ ऑन प्रोसेस, विल हैव वी यूजुअली री इंजीनियर आर प्रोसेसेस। नाउ इस फ़ायदा क्या होता है री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस का, कि आपकी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होती है, सिंगल डॉक्यूमेंटेशन इज़ इन्वॉल्व, यानी एक ही पॉइंट पे हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं और फिर उसको हम डिस्पर्स कर देते हैं टू वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। देन एप्रिसिएशन ऑफ कस्टमर्स, हम कस्टमर्स को अप्रिशिएट करते हैं। कस्टमर इज़ ऑलवेज द की पॉइंट बिहाइंड एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज, एंड दिस बिजनेस प्रोसेस, जो प्रोसेस बेस्ड बिजनेस होते हैं वो they are more systematic in nature. Now, why we do re-engineering? Old era जो था उन of the organization में जो होता था इंडस्ट्री में, वो आपकी हाई डिमांड होती थी और एफिशिएंसी को आपने सिर्फ कंट्रोल करना होता, एफिशिएंसी को हमने देखना होता था या कंट्रोल आपने क्रिएट करना होता था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू एरा इज़ एंटायरली चेंज बिकॉज ऑफ दैट द हाई कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। Then innovation, every organization want to innovate, वो डिफरेंट तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व करना चाह रही है, और स्पीड इज़ द की पॉइंट। हाउ इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट वेदर यू आर सर्विंग द कस्टमर्स वेल और नॉट, but it is becoming more important that how quickly
you are serving your customers. And service and quality, of course, the ultimate focus in this new era. Now, benefits of re-engineering, I will quickly just go through these benefits because most of things have already been discussed. Empowering employees, the BPR ensures empowering employees, eliminate waste, unnecessary management, overhead, and obsoleteness or inefficient processes. Then producing often significant reductions in cost and cycle times. Now that is very important. ये जो whenever we do the BPR exercise, it significantly reduce the cost because of the non-involvement of the duplications and the unnecessary steps. Your cycle time is also reduced. वो जो time है from the input to the output, that is readily reduced through this re-engineering exercise. Then enabling revolutionary improvements in many business processes as measured by quality and customer service. Break through the organizational boundaries. Break organizational boundaries. Bringing customers. Now, organizational boundaries, आपने अक्सर देखा होगा हमारी organizations में जो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज जो होती हैं वो इटसेल्फ क्रिएट हो जाती हैं विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. यानी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट किस्म की बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं और इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है उस तरीके से रेडिली नहीं हो रहा होता अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दैट इज नॉट द केस विद द री-इंजीनियरिंग. इट ब्रेक द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, bringing the customers into the information channels through the communication, networking, and the use of through the use of the information technologies. So some of the BPR objectives is that it improves efficiency, increase effectiveness, cost saving, meaningful work. It encourages flexibility and adaptability. Ultimately, the growth of the business is directly enhanced through these exercises. So imperatives of BPR is that we will have to evaluate the core business activities. Now this is very important. As a first step, first we will have to identify the core processes. That what are the core processes for any organization. उन core processes को या most important processes को हम identify करते हैं और उनको evaluate करते हैं और उसके बाद उसको हम we will consider it for re-engineering. Then radical हम उसको redesign करते हैं. डोंट जस्ट थिंकर, यानी हम मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स की तरफ नहीं जा रहे होते, हम उसको प्रैक्टिकली रीडिज़ाइन हम करते हैं. एंड वी मूव टुवर्ड्स द रेडिकल इंप्रूवमेंट. एम फॉर शार्प इंप्रूवमेंट्स इन द परफॉर्मेंस लेवल्स. अगेन वी टारगेट द रेडिकल इंप्रूवमेंट्स एज फार एज द BPR imperative is concerned. So re-engineering has become the survival study for most of the organizations. And the number of the firms is increased to close. अब अगेन मैं अगर डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ, कभी हम सोच रहे होते हैं कि PIA बंद हो रहा है, कभी रेलवे बंद हो रहा है, कभी स्टील मिल बंद हो रही है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द टू इनवर्ड लुकिंग एंड बिकॉज ऑफ द इनफ्लेक्सिबिलिटी वी हैव इन दिस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. वो जो इनएफिशिएंसी है, वो जो सिस्टम्स है, वो इतना ऑब्सोलीट हो गया हुआ है कि दैट कैन नॉट बी डिलीवर्ड. So ultimately re-engineering जो है that has become the survival for these organizations. Unless you will re-engineer these processes, अगर आप इसके processes को re-engineer या सर्जरी नहीं करेंगे इनकी नहीं करेंगे तो ये revive नहीं हो सकते ये वाले जो organizations हैं. Similar changes occurred in developed and developing nations also, as I give you the example of USA. That how USA government apply this BPR exercise across the different public sector organizations. The same is now being required in most of the developing countries. Ford Motor Company faced business extinction at one time and found the path to renewed success and inspires others. Process through which the continuous success and survival is indicated by Americans. Now इसमें बहुत सी एग्जाम्पल हैं. अगेन ये जो टर्म हमने शुरू में डिस्कस किया, डेट वाज टर्म्ड बाय माइकल हैम्बर, और उसने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को विद इन द USA. द बिजनेस क्लाइमेट मेड री-इंजीनियरिंग नेसेसरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इसको हमने जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट US gave great industrial philosophers like Adam Smith, Henry Ford, but at one time their business were also in trouble, or ultimately they will have to move that concept towards re-engineering. Japanese were also too smart. They moved small market into the world markets with extraordinary quality and manufacturing philosophy.
They cut out unnecessary waste such as safety stock inventories, multiple suppliers, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन को उन्होंने ख़त्म किया, यानी आपने अपने प्रोसेस को इतना ज़्यादा रिफाइन कर लिया कि उसके लिए आपको इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत न पड़े, एंड दैट इंश्योर्स द हाई क्वालिटी एंड लीस्ट कॉस्ट. US adopted the Japanese paradigm because of they recognized the economy, that economy of scale is not as important as the economy of time. Now that is very important class. Economies of scale को जैसा चाइना ने टारगेट किया इन द लास्ट 1 or 2 decades, यानी उन्होंने क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन क्वालिटी एंड रादर देन स्पीड. जो अमेरिकन्स हैं या जो जैपनीज़ हैं उन्होंने फोकस किया इकोनॉमी ऑफ टाइम. इकोनॉमी ऑफ टाइम का मतलब है दे फोकस्ड ऑन द वेलोसिटी, दे फोकस्ड ऑन स्पीड ऑफ सर्विंग देयर कस्टमर्स. ठीक है, कि कितना क्विकली आप अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, और यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीपीआर में. BPR just focus on economy of time or the economy of speed, that how quickly you will serve your stakeholders and the most important stakeholders, that is the customers. So the entire approach was to be flexible and respond quickly to changing customer needs. They opted for flexibility and multi-skilling techniques. Now again multi-skilling technique जो है that is also linked with that BPR exercises, जिसमें हम across the functional जो मैं बात कर रहा था कि we need to have the multi-skilling techniques for this approach. Then customers' response become the primary objective rather than the growth alone. Customers became the key point behind these sort of exercises. In Europe, quite transformation are taking place vitally. Lubricant division of a large oil company has cut its order delivery time to 40%, from 6 weeks to 19 days पे वो ले आए हैं by using that BPR exercise. Similarly, they eliminated $200 million in inventory and doubled its profit. It aims in overall reduction in operating expenses to 35%. So I'm telling you, there are a lot of examples in the last decades, especially in which there are a lot of dramatic improvements done by the different organizations by using this BPR exercise. I just explained to you the importance of BPR, the concept of BPR, and how this BPR is the concept is being used in some of the progressive organizations. And I've already discussed this re-engineering needs in Pakistan. So I am hopeful that you will agree with me that there is a desperate need of re-engineering in our organizations if we want to revive our organizations, and most importantly the public sector organizations. So again, instead of blaming the different people and the employees working in the organizations, we should target the systems, we should target the obsolete processes which are being prevailed in these organizations. So I'm telling you that हमारे जो leaders हैं, they should focus and they should thoroughly concentrate on this approach. Now this approach, re-engineering की जो approach है, that has become obsolete. मैं आपको बता रहा हूँ for the developed nations. ये 1990 में जो concept आया और उन्होंने अगली decade में up to 2000 और the next decade उन्होंने इसको apply करके वो improvement उन्होंने achieve कर ली, and now they are moving towards other different concepts. But we still need this re-engineering concept to be applied in our organizations. So that is desperately needed concepts to be applied in our Pakistani organizations. Now let's discuss the different steps involved in the redesigning processes. We will have to develop the business strategy first. Then most importantly, as a second step, we will have to identify the key processes. The two most important processes which are involved in the BPR exercise. The first one is the identify the key processes, and that is usually termed as is approach. As is approach. As is approach means that before directly going towards re-engineering, we'll have to first analyze our key processes. ठीक है, कि उसमें क्या क्या duplications हैं, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें टाइम वेस्टेज किस तरीके से हैं, वाई द डिफरेंट लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. ये हम तभी करेंगे जब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं अपने करंट प्रोसेस का,
और किस तरीके से प्रोसेस फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द इनपुट टुवर्ड्स द फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट। तो इस तरह से ये जो एज इज एनालिसिस है या आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ की प्रोसेस है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर से ही हम पॉइंट आउट करते हैं कि व्हाट कैन बी दी की एरियाज वी कैन फोकस इन दी BPR एक्सरसाइजेस. So after these analysis of these existing process, then we move towards the redesigning of these process, and then after analysis we just ignore these processes and we will have to redesign, and most importantly we will have to start from scratch, and just keeping in mind the customers, that how we can quickly serve that customers, and we will have to eliminate all the unnecessary steps or activities involved in the existing process. Then again, after implementing, we'll have to monitor and improve further. So 7 principles of BPR as told by the workers, and use the built-in controls. Now this is very important. Whenever we use the technology, we should not involve the as much people in a different process. Rather, we can use the built-in controls in the form of the different softwares. As I gave you the example of ATM, उसमें ज़ाहिर है कंट्रोल है उसका, उसमें आप पूरा उन्होंने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, वो एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड, पिन चेक होता है और बाकी चीज़ें चेक होती हैं. सिमिलरली जब हम कोई प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे होते हैं, तो बाई यूजिंग दी IT वी शुड हैव द बिल्ट इन कंट्रोल्स. Capture data once at its source and have outputs users perform the process. So these are the 7 principles of BPR as explained by the Michael Hammer. A BPR program becomes a tactic, a program to achieve desired results. BPR in isolation from strategic plans will not work. So we'll have to link this BPR concept with the strategic viability of the organization, and it should be linked with the strategic management process to have the real benefits of this BPR exercises. Then the commitment of strategic managers is essential, and most importantly the process owner ka jo role hai, that is very important while doing this BPR exercise. Isolated re-engineering efforts will have no direction and will get lost. So you should properly concentrate on this BPR exercises, and most importantly when a lot of risk is involved, so it means a lot of effort should be there while doing this BPR exercise. Okay, scope of the BPR, as we have already discussed, that it can be intra-functional, which is small in scope within the department, and it may have the least impact. It may be interfunctional, horizontal view across the departments, which have more impact, and it may also be inter-organizational, that is broad view including the entire supply and delivery chain, and it may have the most impact, and we can design the BPR exercise across the different organizational boundaries, across the different boundaries in which the different organizations outside your own boundary is being involved. So 4 generic steps, as I told you earlier in the BPR, is the creating a vision, identifying the existing processes, then we'll have to redesign the processes, and then implementing the redesigned processes. Form your policy group, then appoint BPR process owners. I have already explained about the process owners, because these process owners play a very key role in the success of BPR exercise. Build the BPR project team, and then we should start work. BPR team जो composition है उसमें again process owners are involved, process teams are involved. They can be the different executive teams which may constitute the senior and the middle management, and the BPR coordinators may also be involved. So while doing the BPR exercise, as I discussed earlier, that we will have to minimize the risk and we should ensure the success. Realize that not every company needs to reinvent itself. Do not embark on a BPR project simply because it is the thing to do. Now, it is a very important point that we should not blindly apply the BPR exercises in our organizations on the different processes, because of the risk involved. Radical risk is also involved. We should apply these processes, these exercises on those processes which are
ऑब्सोलीट इन नेचर, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, डिलीवरी नहीं हो रही, ना आपका प्रोसेस डिलीवर कर रहा है, ना ही आपके एम्प्लॉयज़ डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सारे इस किस्म के लूप्स होल्स होते हैं, और आपकी डिलीवरी नहीं हो रही होती, परफॉर्मेंस आपकी नील होती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है कि दिस इज़ द पॉइंट या दिस इज़ द स्टेज इन विच यू शुड अप्लाई द BPR एक्सरसाइज. Top management support and commitment is compulsory in this BPR exercise. That's why it as the top-down approach. Show some results quickly. Go for the small successes at first. Apply a holistic and disciplined approach to manage the change. Involve people in the change process. Now, BPR is also a change, process. So, as we involved in the change management process, we involve the different people. The same is the case with the PPR, that we will have to involve the people while doing this BPR exercise. Then communicate sufficiently to dispel the uncertainty and fear. Expect strenuous resistance and manage it properly. Again, whenever there is a change, तो आपकी resistance जरूर होती है, और जब रेडिकल चेंज होगी तो आपकी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. इसको आपने अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करना है, इस रेजिस्टेंस को. And but always keep in mind the dramatic improvements at the end of this BPR exercise the organization may have. So surround the project with a sense of urgency. यानी अगर आपकी ब्यूरोक्रेटिक अगर ऑर्गेनाइजेशन है और बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको आपको अर्जेंटली टेक अप करना पड़ेगा विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Create an atmosphere of trust and cooperation. Make sure the people who are affected by the old system are going to use the new system and are involved in the change process. No, that is a very important step. Whenever we apply any sort of change process, that we will have to involve the people. The same is the case with the BPR, that you will have to involve the people. And when we are going to analyze the different process, उसमें आपकी जो people involvement है, that is very much important, because these are the people or the employees of the organization who are working under that process. तो जो आपका कंसल्टेंट है या जो प्रोसेस ऑनर है, यू विल हैव टू इन्वॉल्व दोज पीपल सो दैट दे कैन एक्सप्लेन दैट हाउ दिस प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड. Change the way employees are evaluated and rewarded to motivate them to support the system. Staff the project with your best people and provide them with the resources they need to be successful. So if the resources are not there, you cannot again do the BPR exercises. जो अथॉरिटी है और जो रेलिवेंट सोर्सेज हैं, यूजली इसमें BPR एक्सरसाइज में ये होता है कि आपको इनिशियली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर चाहिए होती है व्हेन वी आर गोइंग टू इनिशिएट दिस BPR एक्सरसाइज, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको जो होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो वो जो इनिशियल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, दैट विल डिलीवर यू बैक इन मैनी टाइम्स इन द नियर फ्यूचर. लेकिन क्योंकि इसमें हमने IT को इन्वॉल्व करना होता है, उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन द BPR एक्सरसाइजेस, एंड दैट इज शुड बी अगेन कमिटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. Design the system from the customer's point of view. Now that is the key point behind any sort of BPR exercise, that you will have to define or re-engineer the process, always keeping into mind the different customers. और इसके लिए जो भी रूल्स पॉलिसीज़ आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो वो आप बिल्कुल चेंज कर देते हैं एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. बिकॉज अगर आप अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रूल्स को, प्रोसीजर्स को चेंज नहीं करेंगे, तो दैट BPR एक्सरसाइज विल नॉट डिलीवर ऑन द बेस ऑफ इट. Make sure employees are adequately trained in how to use the new system. Now again, after doing the BPR, we may have the redesigned system, and there should be the proper training that how the different employees can use this new system. Be prepared to change the company's culture. Now again, that is very important. That's why I said that BPR is जो change है, that involves both the cultural change as well as the structural change. It involves both the cultural change and structural change. इसमें हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी चेंज करना पड़ता है. Now, in the last few slides, I will just try to briefly explain that what are the different implementation approaches for BPR exercise. Now, these approaches are not only true for the BPR, but it may be applicable for any of the change management process.
These implementation approaches may be termed as phasing, prototyping, piloting, parallel, and plunge. Now let's briefly discuss each of these approach. Phasing. The phased approach changeover method involves implementing the new system in stages or modules. So rather than entirely changing the system immediately, we apply that re-engineered system in stages or the different modules. We can implement each such system by using any of the other three changeover methods. In this approach, risk of errors or failures is limited to the implemented module only, as well as it is less expensive than the full parallel operation. So इसमें instead of entirely changing or replacing the old system with a new one, हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसको अप्लाई कर देते हैं या किसी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देते हैं. उसको फिर अगर वो सक्सेसफुल होता है उसको फिर ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन उसको हम अप्लाई कर देते हैं. नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डैट? आपका जो रिस्क होता है वो आपका मैनेज हो जाता है. रादर देन एम्प्लॉइंग टू द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको डिफरेंट स्टेजेस पे पहले से चेक कर लेते हैं और उसमें अगर कोई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, वो हम कर लेते हैं. And again, that is less expensive rather than running both of the old system and the new system parallelly. Parallel हम चलाने के बजाय उसको stages में हम उसको check कर लेते हैं. So phased the conversion change to the new system in phases, introducing some of the new applications while still using some of the old applications. तो इस तरह से हम अपने entire जो old system है उसको immediately replace नहीं करते, बल्कि हम डिफरेंट स्टेजेस में और मॉड्यूल्स में उसको वन बाय वन रिप्लेस करते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क एंड इन ऑर्डर टू मैनेज द फाइनेंसेस एज वेल. सेकंड सिस्टम जो है दैट इज द पैरेलल सिस्टम. द पैरेलल ऑपरेशन चेंज ओवर मेथड रिक्वायर्स द बोथ द ओल्ड एंड द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑपरेट फुली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. सो इन दिस पर्टिकुलर फेज हम क्या करते हैं कि हम पैरेलल दोनों सिस्टम साथ साथ चला रहे होते हैं, ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम. कुछ for a particular period of time we run both of the old system and the new system. Now इसके कुछ advantages भी होते हैं और कुछ disadvantages भी होते हैं. One of the disadvantages is that it is most expensive because you need the resources to run both of the old system and the running systems in parallel for a particular period of time. और इसका advantage क्या होता है? This the most costly changeover method and involves low risk. यानी आपका चेंज ओवर मेथड ये कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें रिस्क आपका लेस होता है क्योंकि आप दोनों सिस्टम को साथ साथ चला रहे होते हैं, ओल्ड सिस्टम को और न्यू सिस्टम को. और जब ये ओल्ड जो न्यू सिस्टम है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब ये चेक हो जाता है तो उसके बाद इसको हम रिप्लेस करते हैं. इन दैट सेंस दिस इज़ लेस रिस्की सॉर्ट ऑफ मेथड. The other changeover method जो है we can use is the piloting. The pilot changeover method involves implementing the complete new system at a selected location of the company. So that is slightly different from that phasing. In phasing we apply the system in stages. But in piloting में हम इस जो new system है उसको किसी एक location में किसी एक department में हम check कर लेते हैं और अगर वो successful हो जाता है तो उसको हम apply कर देते हैं for the other departments and the other organizations. So pilot conversion lets one department or location try out the new system while the rest of the organization continues with the old system for a particular period of time. By restricting the implementation to a pilot site reduces the risk of a system failure as compared with this less expensive than the parallel system. तो ये less expensive होता है और आपका risk भी है वो जो है आपका manage हो जाता है. Then prototyping हम method भी use कर सकते हैं for this changeover. A prototype is a working model of a potential solution to a business problem. Rather than applying the whole of the real model, we will just make a prototype model. We will properly test that model and then that can be converted into the real model and that can be applied all over the organizations. और इस पर्पज़ के लिए we use the different types of prototypes. जो आपके level 1 prototype होता है जो एक very initial prototype होता है. Then we move towards the level 2 prototype जो इसकी एक higher version होता है to that of the level 1 prototype. तो जब ये सारे prototypes के level check हो जाते हैं then we will shift over towards the new system and it is being applied to the whole of the organization. Then जो last method हम use कर सकते हैं for the changeover system that is the plunge system.
Plunge converts the whole organization to the complete new system at one time. Rather than using that parallel system or change over the modules, we just cut over the existing system and immediately shift over towards the new system. Now again, one of the advantage of this system is that it's less expensive because we just ignore the the old system and immediately shift over towards the new system, and your finances can be better optimized by that. But it involves the risks because you are immediately changing the new system, old system to the new system. So that is most risky because if there is a problem in the new system or there are other issues, then it may be a problem for the organization. Anyways, we can have the different methods which can be applied or to implement that BPR exercise within the organization. And these जो systems हैं, changeover systems, that can be applied for any sort of change management process. जब भी हम change management process करते हैं and we are trying to shift over to the new system, of these methods, but we should always keep in mind the different advantages and disadvantages of each of these methods. Post cutover monitoring and evaluation. Monitor its performance for a time. Integrate continuous improvement principles in the new process. जब एक दफ़ा BPR कर देते हैं तो उसके बाद you will not use the PPR again and again within the organization. उसके बाद you can use that improvement continuous improvement exercise for the next few period. As I told earlier, that BPR is not the kind of thing that we can apply it continuously. This is a one-time exercise because of the risk involved and because of the magnitude involved in this exercise. So let me conclude today's discussion. BPR is a multi-discipline approach for a strategic change. Now again, at the end, I would again say that BPR is so important exercise, and unfortunately, BPR is not being taught as a subject in our management science disciplines in most of the universities. ये इतना important subject है क्योंकि ये interdisciplinary approach है, यानी आपके जो BPR है that is equally important for all the different disciplines and for all the different सब्जेक्ट्स. यानी आपकी फाइनेंस में भी एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, चेंज मैनेजमेंट में आपका एथिक्स का जो है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस अप्रोच और दिस कॉन्सेप्ट. तो इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है, ड्यू टू दिस इम्पोर्टेंस वी शुड दिस कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन द डिफरेंट मैनेजमेंट साइंस सब्जेक्ट्स. And it is very important for strategic change within the organization. Methodology provides missing how to that must follow the why. Yani it just focus, as I told you earlier, that why we are doing the different activities in a process. We should ask ourselves, and we will have to challenge everything which is not beneficial for the organization as well as for the customers of the organization, and we will have to consider every step that why we are doing this particular step within a process and what is its benefit to our customers. Accordingly, we will have to change and re-engineer our processes. BPR must be managed as a project. PPR must be owned by the organization, not driven by the consultants. Now, इसकी दो approaches हम use कर सकते हैं. We can also involve the consultant for that BPR exercises, but most importantly, अगर हम वो जो प्रोसेस ऑनर है दैट शुड बी असाइंड दिस PPR exercises because he must have known the culture of the organization. But alternatively, we can use both of these approaches. BPR requires constant communication and feedback. So that is just the conclusion of today's session. I am hopeful that this session will be beneficial for you. At least if I am successful to convey the concept of business process re-engineering, and if I am successful for telling you about the importance of this concept of BPR engineering,
तो आई विल थिंक दैट आई हैव सर्व माई पर्पस, क्योंकि ये एक डिफरेंट थोड़ा सा सब्जेक्ट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड आप लोगों ने आगे जाके ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स बनना है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दिस अप्रोच इन ऑर्डर टू bring improvements within the organizations. Okay, thank you very much all the viewers for listening me, and thank you very much for your patience. And again, at the end, I will again pray that may Allah save us all, and wish you good luck. Allah Hafiz.